Today's lecture summaries we covered the ideal low pass filter, जिसमें हमने देखा कि एक लो पास फिल्टर एक बड़े सख्त पॉइंट, जैसे हमारा वो सर्टन पॉइंट आता है तो उससे जो वैल्यू कम या ज़्यादा होती है हम फिल्टर को क्रॉस ओवर कर देते हैं। एंड फिर हमने फिल्टर के रिस्पॉन्सेज देखें कि जो सेंटर पॉइंट है ये आपका डीसी कंपोनेंट होता है, जैसे जैसे आप सेंटर पॉइंट से वे होते रहते हैं इस तरह आपके लो पास फिल्टर का साइज ज़्यादा होता है। सो जितना आपका लो पास फिल्टर का साइज ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपके पास एलिमिनेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सो ये आपके पास एक आइडियल लो पास फिल्टर का रिस्पॉन्स है जिसके अंदर हमने इमेज के अंदर इसके इफेक्ट देखे। देन आफ्टर दिस वी सॉ द इफेक्ट ऑफ low pass filter of the image further by looking at the Butterworth low pass filter। इसमें हमने बटरवर्थ का केस देखा जिसमें हमने देखा कि बटरवर्थ एक बहुत शार्प एज रिस्पॉन्स नहीं देता बल्कि एक स्मूदर एज रिस्पॉन्स देता है, जिसका हमें फ़ायदा होता है कि हमारे कंपोनेंट ज़्यादा अच्छी तरह से विजिबल हो रहे होते हैं। वेयर एज आइडियल लो पास फिल्टर के केस में हमारे पास रिंगिंग इफेक्ट आया था, बटरवर्थ के केस में रिंगिंग इफेक्ट हमारे पास रिमूव हो गया था। फिर उसके बाद हमने बटरवर्थ लो पास फिल्टर का डिफरेंट ऑर्डर्स देखे। वी सॉ द फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर जिसमें हमने एक रिंग देखा, यहाँ पे जो फिफ्थ के ऊपर हमारा रिंग था, कट ऑफ फिल्टर का रिंग था। देन वी सॉ द सेकंड ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर and 20th order filter. This was the best filter, but the implementation was most trivial in this case। इसमें implementation ज़्यादा easy है। और साथ ही यहाँ पे देखें इसमें साइड लोब्स आ रहे हैं, इसमें साइड लोब्स नहीं आ रहे और एक ही स्पाइक आ रही है। अच्छा, इसके बाद वी लुक्ड एट योर गॉसियन लो पास फिल्टर, जिसमें गॉसियन लो पास फिल्टर का रिस्पांस एक सर्टेन पॉइंट पे ज़्यादा अच्छा होता है, वेयर एज द बटर लो पास फिल्टर डज नॉट रिस्पॉन्स एज sharper as compared to the Gaussian low pass filter। And then we looked at the mathematical representation of the three filters, which include your Butterworth filter, Gaussian filter, and your ideal low pass filter to it। And lastly we looked at the response of the Gaussian low pass filter, जिसमें हमें पता लगा कि Gaussian low pass filter आपके ओरिजिनल कंपोनेंट को ज़्यादा अच्छे तरीके से रिस्टोर रखता है। और जो आपके पास गॉसियन लो पास फिल्टर की एप्लीकेशन थी, इसमें वी डिस्कस द एप्लीकेशन जहाँ पे हमें एक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन का सिस्टम बनाना था। और हमने क्या किया कि एक पुराने लेटर्स थे उन्हें स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद ही इन लेटर्स के अंदर जो गैप था ये लेटर्स आपस में ब्रेक डाउन हुए थे। सो वी अप्लाइड दिस गॉसियन फिल्टर, और इस गॉसियन फिल्टर की वजह से हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में जो जो उनका गैप था वो जो टूटा हुआ था वो इसमें कंप्लीट हो गया। एंड देन वी लुक्ड एट द ब्यूटिफिकेशन फिल्टर व्हिच इज बेसिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग योर गॉसियन लो पास फिल्टर। ये आपके मोबाइल फोन्स के अंदर ये वाला फिल्टर इंप्लीमेंट हुआ होता है जब आप ये ब्यूटिफिकेशन फिल्टर ऑन करते हैं। सो जैसे जैसे आप फिल्टर में ब्यूटिफिकेशन फैक्टर इंक्रीज करते रहते हैं, सो व्हाट इज बेसिकली हैपनिंग, आप ये जो डी नॉट की वैल्यू इसको इंक्रीज कर रहे होते हैं। और lastly we looked at the satellite image from the NASA, जिसमें हम इसकी स्कैन लाइंस को एलिमिनेट करना चाह रहे थे। सो ये स्कैन लाइन इसमें इस केस में एलिमिनेट हो गई। So that was it for today's lecture। In the next lecture we will start off with the high pass filter to it। I hope that this lecture was fruitful for you। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो he or she may ask the question from me, and in the next part of it we're going to have an online quiz from the histogram equalization and also from the frequency domain to it। Thank you so much।